So today we will be discussing about secure socket layer, SSL we call usually. First we will discuss the location at which this protocol resides. Now what is this SSL? Basically this provides we can say a secure pipe between over the data which we are transmitting between the web browser and the web server. Okay, we know that application layer data will be created and that will be passed through different layers. But while we are saying the data will be transmitted between the web browser and the web server. Okay, so for that data packets the security will be provided by using the SSL protocol, secure socket layer protocol. Now if you can see this diagram, this is the TCP IP protocol diagram. uh, Here we are having different layers. Now in between the application layer and here we have the fourth layer, that is transport layer. In between this layer we are having this SSL protocol, secure socket layer protocol. Now the layer wise data transmission will be same. At application layer here we will be having a browser and data will be created at application layer. Now those data will be traveled in the form of the packets, and those packets will be transmitted through first of all SSL. ट्रांसपोर्ट लेयर को जाने से पहले वो क्या करेगा, सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा. नाउ एट दिस पोजीशन इन सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, whatever the data which is upcoming from the application layer, that will be encapsulated as a payload, and then one individual header will be added. Okay, SSL will add its own header at this point to this to give more detailed information. Okay, some security to provide some security, some checksum methods will be applied, some different protocol, the help of different protocols will be taken care by you under this secure socket layer, and some header will be added to this data. And again after completion of this process, this particular packet will be transmitted ahead to the transport layer, and the rest of the we can say steps will be same. Like transport layer will transmit it to the network, then it will be transmitted to the data link layer, then to physical layer. Through transmission medium it will be received at the receiver, and again layer wise here it will come at the SSL protocol after the transport layer. At again SSL layer, whatever the header will be added at the sender side, that header will be removed after cross checking entire things which are included into the header. Everything will be matched, whatever sequence, if sequence number is provided, checksum is provided, message digest is given, then entire things will be verified, and this header will be removed at this SSL layer, and then this only data will be transmitted to the application layer of receiver side. Okay, so here you can understood the exact location which is available in between the application layer and the transport layer our SSL will be residing. Okay, now the working of SSL. SSL protocol runs, or we can say will be executed by using the different three protocols: handshake protocol, record protocol, and the alert protocol. These three will be working under this SSL. Now one by one each will be performed, and each and every protocol will be working at different we can say situation. Now here handshake protocol will be executed to provide the authentication. Now this SSL protocol is simply we can say it provides the security parameters like confidentiality and the authentication. Whatever the data we are sending over the browser to the server, web browser to the web server, we provide confidentiality and the we can say authentication. Now that authentication will be maintained by using this handshake, the first protocol, that is the handshake protocol. Then under this record protocol we provide the confidentiality because we perform different tasks, different methods, or we can say simply some sort of encryption we provide on the data at this record protocol. In the alert protocol, if unusual things will happen, something error will happen, then in that case your alert protocol will work in that case. Okay, so we will see one by one each and every protocol. The first one is the handshake protocol. Now simply it will work, or it will begin the working of this protocol by establishing the session. The main purpose of this protocol is to create a session between the client and the server. Okay, to maintain or we can say to maintain the authentication
that we are connecting to the trustworthy server, or we have already connected to trust, or we can say original client. So it provides the authentication. Okay. And for we can say establishing this connection, it uses some sort of the certificates, digital signatures, and some sort of algorithms will be used. And for this purpose, to complete this handshake process, there will be total four phases available under this handshake protocol. Now, if you'll observe, this is a diagram for four phases of the handshake protocol. Total four steps will be performed between the web browser and the web server. This is just to create a session. Okay, we have not yet started the secure data encryption, or we have not yet started the data transmission. Okay, we are only establishing the connection between the browser and the server. Now here four steps are like: establish the security capabilities. Second is the server authentication and the key exchange. Third is the client authentication and the key exchange. At the fourth step, finally, it will be the entire session will be created, and this four phases handshake protocol will be ended. Okay. Now, in this established security capabilities, some sort of digital signatures and the algorithms on which they are going to communicate with each other, they will be shared. In this second step, server authentication and the key exchange will be entirely performed by the server itself. Okay, इसमें कोई भी packet, no any single packet will be transmitted by the client to the server. All the data packets will be transmitted from only server to the client. Okay, this is the second step, server authentication and the key exchange. In the third step, that is the client authentication and the key exchange, here all the packets will be transmitted from client to the server only. No any reply will be coming at this state from server to the client. Now fourth phase, entire handshake protocol phase will be completed. Now we will see this one by one. The first step was establish your security capabilities. Now what is happening here? To maintain a session, or not maintain, to create a session in between the browser and the server, one packet will be transmitted which is called as the hello packet. Okay, first client will be initiating the session. First client will start sending the hello packet to the server. To give reply to this hello, server is also going to reply with the hello packet. Okay, now this hello packet will contain these all parts. This is the version, then random, then session id, and the cipher suit and compression method. Now what includes in the version? Your client, whenever sending the hello packet, that time client will include the highest version which client is supporting. That will be mentioned into this version field, and that will be transmitted to the web server. Okay, now in the second field, that is the random. This random is nothing but the client will generate some random secret key. Whatever the key generator is available at the client side, it will simply generate some key, and it will be transmitted to the server side. Then the next is the session ID. Now suppose this is the newly or we can say client wants to newly create a session with the web server. They are not in a touch, or they are not in a communication before. They are simply or client simply wants to initiate the session for first time. Now in that case, your session ID will be mentioned as 0. Okay, अगर client सबसे पहले बहुत initially start कर रहा है, they are not in a communication in between, या फिर बीच में का कोई चेंज करने के लिए, मैसेज टाइप चेंज करने के लिए नहीं है, बल्कि सबसे पहली बार है, देन इन दैट केस योर सेशन आईडी विल बी मेंशन्ड एट 0. ओके, बट इफ इन बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द सर्वर, कम्युनिकेशन अगर मान लो सेशन ऑलरेडी जनरेटेड है, बट बीच में अगर उसको कोई मैसेज टाइप चेंज करना है या कुछ नया सेशन स्टार्ट करना है, then in that case your session id will be non-zero. Okay, we are talking about the hello packet which is transmitting from the client to the server. Okay, now next is the cipher suit. Now which type of the encryption algorithms will be supported by the client? कौन से algorithms यूज करके वो इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके हाईएस्ट वर्जन्स क्या है, वो कौन से सपोर्ट करता है, दैट विल बी एडवर्टाइज्ड बाय द क्लाइंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कि वो कौन से एल्गोरिथम सपोर्ट करता है फॉर साइफर टेक्स्ट और फॉर इंक्रिप्शन पर्पज. ओके, same is implemented, same is advertised in the compression method also. Now this compression is we can say it is the part of your record protocol. हमने यहाँ पे देखा ना
यहाँ पे 3 different protocols है under the SSL, handshake, record and the alert. Now in the second protocol, in the record protocol, we require to compress some data packets. Okay, हम वो देखेंगे आगे. Now for that compression also we will require some sort of the methods. Now which methods will be supported by the client side, that will be advertised by using this compression method field. Okay, so in this way this all data will be grabbed into one hello packet and that will be transmitted from web browser to the web server. Now server is going to verify that each and every field which is mentioned by the client, and after finalizing means जो भी इसने एडवर्टाइज किए हैं, मान लो साइफर सूट में इसने कुछ मेंशन किया है, yes I support DSC, I support AES algorithm, whatever this algorithms it will support, from that web server will select one of the we can say one of the algorithm, and that finalized algorithm by using which algorithm server is going to communicate with the web browser, that will be mentioned, and then that packet will be transmitted back to the web browser. All the fields will be mentioned in server hello packet also, version जो भी server का version या फिर जो on which they are agree, that will be mentioned. Then one again key will be generated, and that key will be shared by the server to the browser. Session ID, whatever the session ID has been generated, acknowledgement for that will be given. Then the cipher suit which client has advertised, from that one is selected and that will be mentioned into the cipher suit. And compression method, again whatever the compression methods client has advertised in the hello packet, from that one will be selected by the server, and that selected method will be mentioned into that hello packet. So each and every field will be again acknowledged by the web server, and this hello packet will be transmitted from web server to the web client. Okay, so in this way your we can say one first step of the initialization session initialization will be completed. Now the second is the server authentication and the key exchange. Now these four phases we are discussing under this handshake protocol. Okay, 3 protocol hai under the SSR: handshake, record and your alert protocol. So under the handshake protocol total 4 phases will be we can say 4 phases will be implemented. From this was the first one. Now the second phase is server authentication and the key exchange. Now as I explained earlier, in this second phase all steps will be initiated, or all steps will be performed by the server itself. All the packets will be transmitted from server to the client. No any reply will be transmitting from client to the server in this phase. Second phase में सिर्फ server से ही जो भी पैकेट जाएंगे वो जाएंगे. Now what is happening in this step? The first is the certificate step. Now what is happening here? Your web browser your web server will be advertising the certificate details, who is the authenticator. हमने we have already discussed in the digital signature, right, कि उसमें authenticator होता है कि किस तरीके से कौन authentic कौन सा who is the main root authenticator, that will be mentioned under this particular step. Regarding your digital signatures certificate, the details will be mentioned into this step 1. Now the second is, suppose web server doesn't want to discuss about the details about the certificate, then in that case the web server is going to exchange the key. Now this key will be the public key of the web server. Okay, in the second step, if web server is not willing to share the details of the certificate with the client, then web server will be performing this second step. What is the second step? Server key exchange. Now this server key is nothing but the public key of the server. Now this public key will be transmitted from server to the client. अब वो public key use करके आगे वो क्या करेगा, that we will see. But here server public key will be exchanged. Now suppose in some cases, suppose server wants to authenticate or server wants to verify the certificate of the client. अगर उसको कुछ लगा कि whatever the details have been transmitted from client to the server in the hello packet previously, if those details are not sufficient for the server, okay, so in that case server may request for more details about the certificate from the client side, and this is the third step, that is certificate request. But this one is the optional field कि वो अगर उसको चाहिए तभी एक्स्ट्रा कुछ इन्फो चाहिए तभी ये वाला स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट. Then the fourth will be after performing this entire, or we can say all the steps, your server will finish
The second phase, that is server authentication and the public key exchange, this server hello will be completed. Now, the third is the client authentication and the key exchange. Now here, all the packets, or we can say all the steps, will be performed by client to the server. Okay, no any packets will be transmitting from server to the client. All the packets will be transmitting from client to the server only. Now suppose, now this first step is again optional. It depends upon whatever the packets have been transmitted from server to the client. Suppose यहाँ पे अगर server ने, if server has requested for the certificate from the client, then only server client is going to perform this first step. अगर previous step में server has requested some more details from the client, then only client is going to give reply to that particular packet, and it is advertising the certificate, or it is going to give some more details about that certificate. Now in the second step, this is we can say this is the compulsory part. ये ऑप्शनल है बाकी दो, लेकिन ये जो स्टेप है वो कंपलसरी है, दैट इज द क्लाइंट की एक्सचेंज. यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा डायग्राम ये है, बुक में ऐसा ही था. सो क्लाइंट की एक्सचेंज में क्या है, whatever the public key has been transmitted in the previous step. यहाँ पे आपने देखा ना, सर्वर की एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक की एक्सचेंज करता है क्लाइंट के साथ. by using that public key of server, client is going to generate some new pre-master key. ओके एक मास्टर की आगे बनेगी नेक्स्ट प्रोटोकॉल में, नेक्स्ट स्टेप्स में, बट यहाँ पे प्री मास्टर की जनरेट की जाती है बाय यूजिंग द सर्वर्स पब्लिक की, जो कि प्रीवियस स्टेप्स में, प्रीवियस फेज में सर्वर ने शेयर की थी क्लाइंट के साथ, राइट, वेब ब्राउजर के साथ, इस वाले क्लाइंट के साथ. तो बाय यूजिंग दैट पब्लिक की, सम बाय अप्लाइंग सम मेथड्स, your client is going to create some pre-master key, and that created key will be shared with the server now in the second step. Okay, now suppose client also wants to gain some more details about the server. Okay, client को भी अगर चाहिए कि भाई मेरे को नहीं, मुझे भी verify करना है, I also want some more details, then client can also request for the details from the server, that is the certificate verify. This will be the third step. So in this way, this client authentication and the key exchange steps will be performed at the third phase. Now the fourth is the final phase. In this final phase, two steps will be performed by the client side, and the two steps will be performed by the server side. Now what is happening in this first two phases, or we can say first two steps which will be performed by the client? The first one is a change cipher specification, and the second is the finished phase. मतलब एक simple packet जाएगा कि which will tell server कि yes I am done, ये final था मेरा, right, वो उसको बताएगा, so that your handshake protocol session will be stopped from the client side. ये बताने के लिए वहाँ पे एक finished वाला packet भेजा जाएगा. Now what is change cipher specification? Now whatever the pre-master key which is shared previously, इस फेज में क्या हुआ था, क्लाइंट की एक्सचेंज किया था ना, यहाँ पे प्री मास्टर की जनरेट किया था. बाय यूजिंग दैट प्री मास्टर की, नाउ हियर अगेन क्लाइंट इज यूजिंग सम मोर वी कैन से डाइजेस्ट प्रोटोकॉल, जैसे हमने MD5 या SHA, ये जो मैसेज डाइजेस्ट मेथड्स देखे थे. बाय यूजिंग दैट, नाउ क्लाइंट इज गोइंग टू प्रिपेयर नाउ फाइनल मास्टर की. ओके, बाय यूजिंग 48-bit की का वो मास्टर की बनता है. By using the pre-master key which is previously generated, some MAC will be MAC code will be generated, message authentication code. वो क्या होता है, हैश कोड की तरह होता है, राइट. हमने MAC देखा है, हैश कोड देखा है, फिर क्रिप्टोग्राफी, ये ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए सारे यूज किए जाते हैं. So by using that all methods here, by using pre-master key, some MD5 SHA or any one of the method will be used, applied, and one final 48-bit key, master key, will be used, and now that will be shared with the web server. Fine. And then after sharing this, client will finish its handshake protocol. Fine. Now again, by using that we can say pre-master key which is shared by the client, server is also going to create one key at the server side, and details about that will be shared by the server to the client, and then server is also going to finish this handshake protocol. So in this way, in the finalized phase, all the steps will be completed under this handshake protocol, right? This is the handshake protocol.
Basically, this handshake protocol is used to for authentication purpose. Okay, it will confirm about the originality of the client and the server, and for this purpose it performs this all four steps. Okay, now the next we will discuss about the record protocol, which is the second protocol used by the SSL for the entire working of, or we can say for providing the security services, under which we are having the confidentiality. Now confidentiality services will be provided by using the record protocol, confidentiality as well as the integrity. जब हम confidentiality provide करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि integrity भी we will we can achieve, right? Because if we are maintaining the security, हम अगर अपने डेटा को उतने लेवल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी we can make sure that no one can harm that packet, right? No one can harm that data, no one can attack, no one can modify, no one can update that data. That only we can this claim, right? This is the integrity. There is no any updation. So if we are providing the confidentiality, simply we are saying integrity will be maintained. So to maintain this or to provide these two security services, record protocol will be working. Now what is happening under this record protocol? These all steps will be performed to provide the confidentiality. Now whatever the data will be generated at the application layer, this will be broken down into the different type of different fields, or we can say different partition में उसको break किया जाएगा. Now on each and every data broken packets, your fragmentation step will be performed. Fragmentation, जो आपका एप्लीकेशन में से डेटा आ रहा है उसको यहाँ से ब्रेक किया जाएगा इन द फ्रैगमेंटेशन स्टेप इटसेल्फ. नाउ ऑन ईच फ्रैगमेंटेड फील्ड, जो भी एक ईच फ्रैगमेंटेड फील्ड है, ऑन दैट जो भी बिलो यहाँ पे मेंशन सारे स्टेप्स है वो हर एक आपके डेटा ब्रोकन डाउन डेटा पैकेट पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे. द फर्स्ट विल बी द कॉम्प्रेशन. So even if you are performing the compression, it will be we can say lossless compression. ऐसा नहीं कि आप कुछ compress कर रहे हैं so there will be any loss of data will happen. No, this will be the lossless compression method. Now कौन सा method यहाँ पे use होगा? This we have we can say server have already decided that in the first protocol, right? यहाँ पे जब हम देख रहे थे first hello packet जो transmit हुआ था, here the compression method, whatever the client is supporting all compression methods that will be advertised in the hello packet, right? Client side की तरफ से, and server will decide, वो एक फाइनल करेगा उन सब में से, और कौन सा फाइनल हुआ है वो सर्वर हेलो पैकेट में वापस से एक्नॉलेज करता है. So by using that compression method, these data packets will be compressed, and then after compression on that individual this data packet, we are applying the MAC. We are applying some calculations and we are creating the MAC. MAC is message authentication code. It works like a hash code, right? वो एक तरीके का checksum ही होता है. So this checksum or this code will be verified at the receiver side also. If received or if the received MAC and the calculated MAC at the receiver side both are equal, then only receiver will confirm the integrity of the data, isn't it? So here addition of the MAC will be performed, and on this entire data field, now the encryption will be performed. Now again, which encryption method the server and the client is going to use, that will be clearly mentioned in the hello packet. वहाँ पे वो already previously decide हुआ था. So by using that particular encryption method, this each and every packet will be encrypted. So in this packet, payload मतलब actual data as well as the MAC is also available, और इस entire data packet पे यहाँ पे encryption होता है. Now after encryption, again the one extra header will be added. Okay, if you remember in the first diagram जहाँ हम उसका location discuss कर रहे थे, here whatever the data is coming from the application layer, we are encapsulating here, right? यहाँ पे एक उसका हम partition कर रहे हैं और इस entire data पे हम लोग एक header add कर रहे हैं. So ये हुआ हमारा last part, right? कि हम यहाँ पे header part add करते हैं. So ये जो payload है, इस payload में हमने क्या क्या किया, उसको divide किया, फिर compress किया, then we have added MAC, then we have encrypted, and then we have appended the header. This will be the SSL header. Okay, so in this way each and every divided, we can say partition,
will be encapsulated into different by using compression, by using MAC authentication, and then encryption method. So in this way, simply data will be transmitted, and here we are providing the confidentiality because we are encrypting the data. Now the last protocol is the alert protocol. Now in this alert protocol, suppose while the data is transmitting between the web browser and the web server, so if any one of the party, that client or the server, depends, if any one of the party will detect an error, so the detecting party will simply um, we can say execute this alert protocol. So what it will do, it will simply send the message to the other party about this detected error, and it will simply end the session. Whatever the sessions have been created, the keys which have been exchanged, and the algorithms which have been exchanged, the entire things will be stopped. Okay, सब कुछ वहाँ पे close किया जाएगा. If it is a severe error, if that error will be handled, can be handled by the server side itself or the client side itself, whoever has detected, जिसने भी detect किया है, अगर उसके side से वो handle हो सकता है, then it will be handled and it will be resumed. But if it is a severe error is severe, then entire session will be ended by the detected party. Okay, and to we can say to detected error will be mentioned under this alert protocol, and this particular packet will be transmitted from that detected party to the another party. ओके मान लो कि सर्वर ने ये डिटेक्ट किया एरर इन बिटवीन द ट्रांसमिशन, कुछ एरर ऑकर हुआ, कुछ सीवियर अटैक है और फिर वो अभी हैंडल नहीं हो सकता है, सो वी विल हैव टू स्टॉप द सेशन. सो दिस अलर्ट प्रोटोकॉल विल ट्रांसमिट सम दिस टू पार्टीशन डेटा. एक है सिवियरिटी, अगर मान लो बहुत ज़्यादा सीवियर है प्रॉब्लम जहाँ पे हमको सेशन एंड ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 2 बाइट मेंशन होता है. सीवियरिटी 2 बाइट का यहाँ पे मेंशन किया जाता है. उसका कॉजेस क्या है, if it is rectified at the server side, then it will be mentioned into this cause, which is of again the 2 byte, and it will transmit it to the other party, that is client side. Okay, अगर सीवियर नहीं है, सेशन एंड नहीं करने वाला है, but still your server is going to send this alert protocol to the client side, but in that case your severity field will be only of 1 byte. ठीक है, वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा, सिर्फ वो बताएगा कि कुछ प्रॉब्लम ऑकर हुआ है, तो वो बस 1 बाइट के थ्रू उसको मेंशन किया जाएगा. दिस इज द अलर्ट प्रोटोकॉल. ओके, so in this way your SSL will work to provide the security over the data which is being transmitted between the web browser and the web server, right? web browser and the web server. वहाँ पे एक सिक्योर पाइप वहाँ पे उसको प्रोवाइड करता है, एक टनल क्रिएट करता है, एंड देन इट विल बी ट्रांसमिटेड, and it will take the help of handshake protocol, record protocol, and alert protocol. Handshake protocol to provide the authentication services, record protocol to provide confidentiality and the integrity services. And if any error will occur in between the transmission, then the alert protocol will send the alert notification to the other party. Okay, so these are the 3 protocols under SSL. So 10 marks question will be asked usually based upon the SSL. Now, the next, here we have Internet Protocol Security, which we usually called as IPsec, Internet Protocol Security. Now, IPsec is again the collection of protocol which is designed by the Internet Engineering Task Force, IETF. Now, what it does, it again provides the security over the data. बट कौन से डेटा में या फिर ये IPsec कहाँ रिलाई करता है? Usually this IPsec protocol relies in transport layer and the network layer. In each layer we know that हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है, हर एक लेयर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर द डेटा. हम काम हर एक लेयर वहाँ पे काम करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. बट IPsec इज अगेन यूज्ड at transport, either at transport layer or at network layer. दोनों में भी अलग, कभी इसमें कभी उसमें, मतलब दोनों में भी काम कर सकता है, दोनों भी लेयर में ये सपोर्ट करता है IPsec. So this IPsec is provided again
जो हमारे बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, ऑथेंटिकेशन, सो दैट वी कैन मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ द क्लाइंट एंड द सर्वर, जो भी हमारे सोर्सेस हैं दो, उसका ऑथेंटिकेट करने के लिए. देन द कॉन्फिडेंशियलिटी, so we are saying if confidentiality is there then integrity will be maintained. matlab there is no any modification in the data, there is no any harm on the data will be happening in between the transmission, right? So these three services will be provided by the IPsec: authentication, confidentiality, integrity. We all are aware about these things now in detail. So your IPsec will be operate in one of the two mode. It supports two modes basically, transport mode and the tunnel mode. जब भी ये काम करता है तो या तो ट्रांसपोर्ट मोड में होता है या तो टनल मोड में होता है. अब दोनों में फर्क क्या है दैट वी विल डिस्कस, बट रिमेंबर ऑलवेज इट विल वर्क either any one of the mode, either transport mode or the tunnel mode. Now in transport mode, it will provide the security, or we can say whatever the mechanisms will be there for encryption or to maintain the security. This will be done only on the payload. A payload matlab the data which is coming from the upper layer, that we will say as a payload. Okay, और ये IP header, in each layer will add its own header, right? तो यहाँ पे दो पार्टीशन होता है, एक है IP हेडर और दूसरा IP पेलोड. अब IP पेलोड ये होता है कि ऊपर से जो भी डेटा आया है फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, the data whatever is coming from the upper layer, that we are calling as a payload. So only on the payload IPsec is going to provide the security. Okay, it protects the payload coming from the transport layer. It does not protect the IP header. Each and every data packet which is moving from upper layer to the lower layer, each will be, we can say, transmitting in the form of two partition. एक होता है पेलोड, दूसरा होता है हेडर. अब वो हेडर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेयर में हो. आप एप्लीकेशन लेयर में तो एंटायर डेटा होता है, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है वी कॉल इट एज अ डेटाग्राम, राइट? तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर है वहां पे वो अपना खुद का एक हेडर ऐड कर देता है, राइट? और एक पेलोड होता है, मतलब जो ऊपर से डेटा आया. देन ट्रांसपोर्ट लेयर विल ट्रांसमिट इट टू द नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर अपना खुद का एक हेडर ऐड करता है जिसे हम आईपी हेडर कहते हैं. एंड द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर, मतलब जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर प्लस उसका डेटा, इन सबको एक इनकैप्सुलेट करता है, उसको पेलोड बनाता है और उसको एक हेडर ऐड करता है. वी कॉल इट एज आईपी हेडर. अब वो डेटा लिंक लेयर की तरफ जाता है. नाउ ओनली द डेटा लिंक लेयर इज देयर वेयर वी आर एडिंग हेडर एज वेल एज द ट्रेलर, राइट? तो इस तरीके से जब डेटा मूव करता है तो IPsec अगर ट्रांसपोर्ट मोड में काम कर रहा है, then whatever the data is coming from the transport layer, we can say it will only protect the payload, not to the header. Okay, now how it will protect, or we can say कैसे perform किया जाता है. This is the IP header which is not encrypted by using the IPsec, only the payload will be encrypted. Now in this way, in this also it is adding the ESP header and the ESP trailer. Now what is ESP? Encapsulating security payload. ये हम आर्किटेक्चर में आगे पढ़ेंगे, IPsec के आर्किटेक्चर में आगे पढ़ेंगे. But this ESP header and the ESP trailer will be added extra to this IP payload. ये जो डेटा ऊपर से आया है इसको अपना खुद से फिर से लगाएगा वो हेडर एंड ट्रेलर, ठीक है? And this will be encrypted. Whatever the header and trailer it is adding, this entire payload will be again encrypted and then it will be transmitted to the data link layer below. ये नेटवर्क लेयर में हो रहा है ना, IPsec is working under the network layer, right? And now IPsec is adding security or providing security on the IP payload. Fine. Now if we will discuss the tunnel mode. Now tunnel mode protects the entire IP packet which include IP header as well as the IP payload. पीछे ट्रांसपोर्ट मोड में क्या वीकनेस था कि आईपी हेडर वी आर नॉट इंक्रिप्टिंग. तो यहाँ पे अगर अटैक हुआ, ये भी ऑलरेडी बहुत सारा इंक्रिप्टेड होता है, ऊपर से कितने हेडर्स वहां पे बनते आ रहे हैं, राइट? तो होता ही है. बट अगेन इन द टनल मोड व्हाट वी आर डूइंग, द आईपी हेडर एंड द आईपी पेलोड, दिस एंटायर टर्म विल बी इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग द IPsec. ओके, अब IPsec खुद से अपना क्या कर रहा है, हेडर ऐड कर रहा है, ट्रेलर ऐड कर रहा है, एंड इट इज इंक्रिप्टिंग दिस एंटायर थिंग
into the one packet, इनकैप्सुलेट करता है ये सबको पूरा। पिछले इसमें सिर्फ हमने आईपी पेलोड को ही प्रोटेक्ट किया था। नाउ आफ्टर एडिंग दिस हेडर एंड द ट्रेलर, दिस विल बिकम अ न्यू पेलोड नाउ। ओके, हेडर ट्रेलर तो ऐड करेगा ही, अब ये फिर से न्यू पेलोड बनेगा एंड देन वी आर एडिंग अ न्यू आईपी हेडर एट द नेटवर्क लेयर। यहाँ पीछे देखो, ये आईपी हेडर था जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, बस पेलोड को फिर से हम लोग हेडर ट्रेलर ऐड कर रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, पूरा जो भी डेटा ऊपर से आ रहा है, वो हेडर है, वो ट्रेलर है, वो ट्रेलर तो नहीं होगा बट हेडर है एंड द पेलोड है, वो एंटायर थिंग हम लोग इनक्रिप्ट कर रहे हैं एंड देन अगेन न्यूली वी आर एडिंग द आईपी हेडर at the network layer and then this will be transmitted to the data link layer. This is the tunnel mode. ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट मोड में हम सिर्फ पेलोड को प्रोटेक्ट करते हैं और टनल मोड में हम आईपी हेडर एज वेल एज पेलोड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज द IPsec आर्किटेक्चर। नाउ एज आई सेड, IPsec विल बी यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल्स अगेन। हियर हमने जो देखा था, IPsec इज द कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, राइट? सो विच प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है? दिस इज द ESP, encapsulating security payload protocol. One is the authentication header protocol and the another is internet key exchange protocol. These are the three protocols which is used under this IPsec. Now whenever IPsec is providing services या फिर इसकी सर्विस अगर यूज कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल अगर वर्क कर रहा है, तो either it will be using ESP और the authentication header. इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा और इन दोनों के साथ साथ IKE will be working by default. ओके, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल विल बी वर्किंग बाय डिफॉल्ट, मतलब वो हमेशा रहेगा ही, बट इन दोनों में से एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही रहेगा। इधर ये यूज कर रहा है या तो फिर ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। अब ये दोनों में फर्क क्या है? इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। नाउ दिस ESP protocol will be providing the confidentiality, integrity as well as the authentication. So in case जहाँ पे ऐसी कोई सर्विसेज है जहाँ आपको ये तीनों सर्विसेज चाहिए, okay, whatever the data you are transmitting, on that data if you want to provide, if you want to authenticate also, if you want to use services of confidentiality, integrity also, then in that case your ESP protocol will be working, तीनों सर्विसेज अगर चाहिए, ठीक है। बट मान लो किसी ऐसे केस में जहां पे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए, डेटा को सिक्योर करना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन मेंटेन करना है। ओके, सो इन दैट केस यू कैन यूज ऑथेंटिकेशन हेडर, जहां पे आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन चाहिए, ओके, वहां पे यू कैन यूज ऑथेंटिकेशन हेडर एंड विद दिस बोथ you there will be by default protocol, that is internet key exchange protocol. Now we will see the data packet protocol header, authentication header, ये जो हमने दूसरा डिस्कस किया था ऑथेंटिकेशन हेडर, जिस केस में हमें चाहिए कि दोनों पार्टीज के बीच में ऑथेंटिकेशन चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी की हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपका IPsec ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज द एंटायर डेटा पैकेट IP हेडर। इफ यूर IPsec इज यूजिंग द ऑथेंटिकेशन हेडर, देन उसका यहाँ पे पैकेट फॉर्मेट मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर होगा। अगर वो ESP यूज कर रहा है तो यहाँ पे ESP रहेगा, बट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर यूज कर रहा है। रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैकेट एंड द पैडिंग, ओके, ये पूरा आपका डेटा पैकेट पेलोड जो भी होता है वो है। तो अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर में क्या क्या आपको बिट्स दिख रहे हैं? 8 बिट नेक्स्ट हेडर, आपका नेक्स्ट डेटा पैकेट का जो भी हेडर मेंशन रहेगा दैट विल बी हियर, दैट विल बी प्रेजेंट हियर इन द 8 बिट। पेलोड लेंथ, ये जो आपका रेस्ट ऑफ द पैकेट रहता है, मतलब एक्चुअल डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द अबाउ लेयर, उसका जो लेंथ रहेगा दैट विल बी मेंशन अंडर दिस पेलोड लेंथ बाय यूजिंग 8 बिट। देन द 16 बिट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस, टोटल 16 बिट्स विल बी यूज्ड। इन सम केसेस इट में पॉसिबल कि कुछ बीट्स हमको पैडिंग के लिए कम पड़ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग रिजर्व बीट्स में से कुछ बीट्स यूज कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या बताता है? द अल्गोरिदम्स विच यू आर यूजिंग, या फिर जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं,
हर एक एल्गोरिदम का हर एक मेथड का एक कोड रहता है, ठीक है। दैट कोड विल बी मेंशन्ड अंडर द सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। अगर एस एच ए है, फॉर एग्जाम्पल मैं बस बता रही हूँ, तो एस एच ए का मान लो 002 कोड है, तो द कोड विल बी मेंशन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड अंडर द सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। नाउ द सीक्वेंस नंबर, द नंबर विच विल बी यूज्ड, या फिर हम कह सकते हैं पैकेट नंबर कह सकते हैं, सीक्वेंस नंबर कह सकते हैं, which is used at the receiver side to, we can say, to combine all the packets, उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, आगे पीछे ना हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे सीक्वेंस नंबर मेंशन किया जाएगा। देन द लास्ट फील्ड हियर इज ऑथेंटिकेशन डेटा, डाइजेस्ट और द वेरिएबल लेंथ। अभी ऑथेंटिकेशन डेटा क्या है, द चेकसम विच वी आर अप्लाइंग हियर, या फिर हैश कोड, मैसेज डाइजेस्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं, that checksum bits will be added here in the authentication data, and that will be verified at the receiver side. Okay, so in this way all the fields will be mentioned in the authentication header. So the case where you want to provide the authentication on the data in between the client and the server, there this protocol will be working. But now if you want to suppose provide all the three services, confidentiality, integrity, and the authentication, entire all our CIA, right? So this will be maintained under this encapsulating security payload, ESP protocol. Okay, so what is happening, the same your authentication data, IP header, this will be your payload, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे बस एज की जगह पे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर था, वहाँ पे अब क्या है, ESP। Now ESP will be adding its own header as well as the trailer. It will be of 32 bit. It is mentioning the security parameter index as I discussed, कि जो भी algorithms या protocols used हो रहे हैं, methods use हो रहे हैं, उसका एक code रहता है, that code will be mentioned again in this. Then we are having the sequence number, okay, sequence number of that packet will be mentioned here. Now at the trailer space, which is again 32 bit, some padding bits will be mentioned, okay, extra this is again padding, मतलब क्या होता है, to maintain the length of that particular packet। मान लो पैकेट का लेंथ हमेशा 48 बीट होता है, लेकिन आपका जो डेटा बन रहा है वो 30 बीट का बन रहा है, तो रेस्ट ऑफ द जो बीट्स रहते हैं वो पैडिंग बीट से क्या किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं। दिस इज द पैडिंग बीट। नाउ दिस एंटायर थिंग, जो ऊपर से पेलोड आया है आपका, वो पेलोड and your header and the trailer will be added, and this entire thing will be encrypted. Okay, ये पूरा के पूरा सब कुछ encrypt किया जाएगा by using one of the algorithm. So if we are providing the encryption, मतलब हम लोग डेटा को confidentiality provide कर रहे हैं। Now the next is IKE, this one. इन दोनों में से कोई एक at the time use किया जाएगा, but with this all time your IKE will be present, Internet Key Exchange Protocol. Now it is a network security protocol which is designed to dynamically exchange encryption keys and find a way over security association between two devices. IKE provides message content protection and also an open frame for implementing standard algorithms. Simple way में बात करेंगे, so जैसे कि whenever the data will be encrypted, that means data will be decrypted at the receiver side, and if we want to provide, if we want to proceed with the encryption and the decryption, then by default we will require some keys. So those keys will be maintained by using this IKey. This is the key management tool. Okay, तो अगर मान लो public key है, so if that public key will be generated, then that public key should be present to each and every available network, available devices on that network, right? तो वो सब मैनेज किया जाएगा by this IKE। अगर पब्लिक की है तो वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए पब्लिकली। If it is a secret key, if it is a private key, then the confidentiality of that key should be maintained. और we can say जब हम की भी ट्रैवल करते हैं, की भी अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, so we should provide some security to that key also. ऐसा नहीं कि वो की प्लेन टेक्स्ट में ही हम भेज देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। We provide some encryption, we provide some security to that key also. So these entire things will be managed by this Internet Key Exchange Protocol. Okay, so in this way your we can say IPsec will be working
either at the transport layer or at the network layer. Usually it works under the network layer. So SSL and the IPsec, both we have discussed today, and we will stop here. The next terms we will discuss in the next session. Mark your attendance. If already marked, you can leave the session.